Welcome to One India. This is our special coverage on the death of India's top military officer, Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, as the nation pays its final tribute to him. The nation is grieving his loss. We also pay our final respects to him. At this point in time, the personal tragedy for many is unimaginable. The families, the sons, the daughters, the wives, they're completely shattered. We must also remember the countless men in uniform that General Rawat came in contact with, the countless lives he has touched personally. They also feel his loss deeply. And I have one such person with me on the show today, Major DP Singh, better known as Blade Runner, a Kargil war survivor, and Asia's first disabled solo skydiver. Thank you very much, sir, for being with us here today. Sir, Hello. if I can ask you to share some of your personal memories with General Rawat, I believe you have met him and you have much to share. You owe some of your achievements to him. If you could share some personal memories. Yes, it's very unfortunate that today we are connected to discuss the departed souls and the memories related with them. But then that's what the life is. It is uncertain. It may end any time. This is what the message time and again when we see any soldier sacrificing himself for the sake of country. So let's cherish the life. Let's pray for Group Captain Varun, who is the only survivor. And let's pray for the courage of the families who have seen the harsh realities and have to face it now throughout the life. But coming back to General Rawat, of course, I was fortunate enough to be in touch and interact at number of places, number of time with him in person when he was Chief of Army Staff. The interaction started way back in 2018. I remember I was finishing my NGO's one of the biggest movement, Swachhability Run, which was ending in the month of November, in the month of December in Bangalore. Then I received the reply to the mail that I had written to Chief that in order to continue the implementation of the expert committee, which I was part of, which was constituted by the previous Raksha Mantri, late Mr. Manohar Parrikar, it was important to meet the new Raksha Mantri, then Mrs. Nirmala Sitharaman, and I wanted Chief of Army Staff, General Bipin Rawat, then to apprise the whole situation. So in that process, I had written a mail, in detail mail to him, and he was gracious enough to understand the criticality of the matter, because the committee was constituted to look after all the matters which are leading to court case, litigation and misery, whether it is related to disability matters, whether it is for service matters. It was a comprehensive work done by us. So he was gracious enough to give me time, and we met for the first time in 2018 year end. He heard me, the whole committee thing he heard, and he was very much inclined that this is a super work done by the expert committee under General Mukesh Sabharwal. So it's very important to get it implemented. So that is when I wanted to go and meet Raksha Mantri personally, but he said, no, I will accompany you and we both will go and request her to look into the matters so that it gets implemented as desired by Mr. Manohar Parrikar also. And we both went together to the then Raksha Mantri. And that is how the journey of interaction with General Bipin Rawat, late General Bipin Rawat, started. Then came the year was dedicated to
the soldier who got disabled in line of duty. I wanted to share one particular incident here. General Rawat might be taken as a man who was outspoken in his own style. In many spheres of life, people do not appreciate such things. However, I would like to apprise you, he was a man who was considerate enough to understand the pros and cons and having a large heart enough to change his own decisions also. For example, when the decision of dedicating the year 20,000 to the 2018 was taken, that initial decision was that the year will be dedicated to the soldier who got, or rather, a war wounded soldier. And during one of the interaction, I suggested General Rawat that when we are dedicating this to war wounded soldier, might as well the most important and critical factor which is related to understand the pains and agony and requirements is to have the data bank, collection of data, who is in what condition, in which area, what is his financial, what is his economical, what is his personal condition, if alive, what is his medical condition, and what is the condition of family if the soldier is no more. So this data was the most critical and important data on which the policies or the change in the policy could have been done. So when I suggested him, I said, sir, if in case army works on orders, if you give a specific order to somebody, he will stick to that particular direction and he will not deviate from the orders. That's what we are respected for. So in case if you say Natha Singh, a Sipahi who has gone to do the recce of a particular village to collect this particular data, and he sticks to only war wounded personals and the families related. Imagine a situation where he is going to a house which belongs to a war wounded, and in the next house itself there is a guy who may not be a war wounded but disabled. So because of the restriction in the order, he will not go and pick up the data of that particular person. So even after doing a lot of groundwork, we will not have the total data compiled, which is a must for bringing any policy changes or benefit to the last mile. So he said, that's a valid point. I said, sir, then that's the reason I request you to change the name of the year and let's reframe it as soldier who got disabled. And that is what, a week before announcement of the year, when all the paperwork, all the publications had happened, when I suggested, because that's when I got the opportunity to interact with him, meet him in person and submit this particular logical point, he accepted it and he got the everything revised. And that is how the year was converted from year dedicated to war wounded to year dedicated to a disabled soldier. Now imagine a person listening to a small unknown veteran who is not even, a colonel in while I was serving. I was just a piddly major, as they call it in a regular parlance. But then he heard me because it was a logical point and I could muster the courage to walk up to him and suggest him that logic. So that was the aura which a general or a people who of his rank should have, and he had that. Now, if this is something which is possible for me, then in particular, these things can be possible for anybody and everybody who is working as advisors to them, the gentleman, the late general. So that I would like to intervene and say you're being a bit humble. You're being a bit humble when you say that you were a small unknown soldier, just a major. But yes, I understand the graciousness of General Rawat in listening to you and also changing plans at the last minute. Yeah, because you see,
understand one perspective. It is very easy to say that General was an outspoken general and he brought, he hammered many points which were not so desired. But then what was the role of the advisors? They could have walked up to the general and suggested that, sir, this is the pros and this is the con, and it's not me in particular who just quoted you example. I have known other senior officers who have given similar examples to me, that he might be a go-getter type of a person who passes instruction at the tip of the hat. But then he also understands, if you walk up to him, that there are pros and cons to the matter, and he changes his own orders. So that should be the way a person should work, and he was working on the similar lines. Understood, sir. Besides that, would you like to talk about why you attribute some of your success to him? You dedicated your achievement, the fact that you're a record holder, to General Rawat. Why? Yes, there were many suggestions and points and requests related to the year of disabled, which came to my mind, and I submitted to him. One very particular point which I want to further emphasize was the support system, the emotional and psychological support system of existing system in the present organization, whether it is fulfilling the need of the hour or not. See, I was a soldier till 2007, and I got injured in 1999 war. So during 1999 period, the culture per se in the organization, what it was and what it is today, there is a difference which automatically comes with the passage of time. Similarly, our organization also got affected, and there is a cultural difference which has come with the passage of time. When I got injured, I was not aware what exactly is PTSD, or what exactly is the trauma related to war, trauma related to big injuries and stuff like that. It was just the peer support group, it was the camaraderie, and it was the support system, and most importantly, my own spiritual inclination which helped me, and of course, unaware to the fact that it is a PTSD or something like that. When you get exposed, when you get aware, at times you brood over those things and you feel bad. I was totally unaware. So the spiritual inclination made me stronger from inside and rise out of those emotional and psychological turbulent times which I faced personally. However, with the passage of time, the weakness of, I would not say that it has totally gone off, the camaraderie is still there, but in relation to what it used to be, it is no more the same now. There is some amount of changes which have occurred because of the influence of the existing society. Thinning of structure has impacted the bonding of soldier to soldier and officers to officer. No more you see the culture of calling on, no more you see the culture of interaction out of the office hours is as prevalent as it used to be in earlier times. People are more focused on their personal growth and how they are going to achieve. They plan better nowadays. We were unaware. We were as unaware that we didn't even know that what is the salary coming to our banks and how to read the salary slip. But nowadays, financial, economical, personal, all these growths were given more important than anything else. So the soldier who gets injured or soldier who gets impacted,
is much loner than what he used to be earlier, despite the fact that he's connected socially on social media. So it was very important. It was very important to bring this point out to General and request him that let's have a organizational support system. At present in the army, the psychological support per se is not there. Psychiatric support is there. Psychiatric department, psychiatric officer, the doctors are there. However, that psychiatric department only treats with the usage of medicines. But there are many traumas, there are many subconscious impacts of exposure to harsh conditions and realities of service condition, which impacts you subconsciously, which leads to untimely exposure to heart attacks, untimely exposure to death, and these things are rising in number nowadays. So how do we control it? So the answer to that is that we should also have a psychological support system, adding to the strength of this psychiatric department, which is already existing in the military hospitals. So that was the point which was put across, and General was gracious enough to say, yes, we should have, and we organized few seminars, few conferences to bring the change, to understand that there is a difference between psychology, psychiatry, clinical psychologist, and psychiatrist, because this basic change also is not being understood by many. So when we were undergoing all these things, morale plays a very big role. So a point came that how do we keep the morale of a soldier high and still flying? Because somewhere, even if there is a dust which has covered due to injuries and due to secludedness, due to loneliness and due to low morale, still the fact that a soldier is supremely passionate and Josh is full there inside him is not being taken away. So how do we regenerate and regenerate that? So understand, on one side, one should have this support system at the organizational level, which can be brought by bringing the psychologists, clinical psychologists, who can who can help out the affected parties through counseling, through talking it out, and then if required through medicine, not directly through medicine. So there is a big difference. Right. On the other hand, we should bring out some such acts which motivates that person who is sitting on bed, maybe on wheelchair, somewhere interiors, to remind him that he is still the same soldier. So he wanted to carry out some such activity which could bring out the ability per se of that soldier more into the picture than the disability which is impacted out of the injuries and stuff like that. Yes, sir. And that is where I jumped on the point and I requested him, sir, what if we close the year of disabled, the year which is being dedicated to the soldier who got disabled in line of duty, on a very high note? He said, what do you mean by that? I said, sir, I have a dream to go for a skydiving. He said, what? I was a little surprised, but then I said, yes, sir, that's what is possible. Now, enough of road running. I have run on high altitudes, I have run on kacha pakka tracks and everywhere. Why not raise the bar further? He said, okay, what do you want to do? I said, I want to get trained for this skydiving, and Army Adventure Wing conducts such camps. I am a veteran. I cannot directly request them unless you allow and approve, because it's a dangerous game. It may cost me my life and death. He said, if you are okay, then I don't have any issue. And I gave a request in writing, which he approved. And that is how in March 2019, I joined the camp of Army Adventure Wing under Colonel
Dadwal, who is a expert trainer of skydiving, and in this year he's been conferred with Tenzing Norgay award also. Under his expertise, I got trained in Nasik, and on 28th of March 2019, the first disabled solo skydiver of Asia successfully landed at the airfield of Nasik. Now, this could not have been possible had General did not have the vision that a soldier still carries the passion and josh of a trained soldier despite he being injured, maybe howsoever percentage of injury is there. I'm 100% disabled, but he had full confidence and faith on his soldiers. Yes, sir. And he agreed upon my request, and that is how I could possibly live up to his expectations. So that was the graciousness of General Bipin Rawat, because that is how he could highlight also the fact that army soldier is supremely passionate, dedicated to the country, despite in conditions which are taken as disabled, paraplegic, quadriplegic, and whatnot. Yes, So sir. that's the reason it is important. On this occasion, I felt that the least honor I can confer to the person who became the catalyst for bringing that laurel to army and dedicated, that award is named on my name. So I dedicated this achievement of mine to late General Bipin Rawat, our Honorable Chief of Defence Staff. So, of course, healing from these wounds take a lifetime, and for any wounded soldier, I'm sure you can speak that the courage comes from within, and it came from your spiritual leaning, you say, and from within yourself. But how much does support from say top military leaders also matter for a soldier who's on bed? How much does encouragement from their seniors matter in the whole healing process? It actually matters because it's an organization where we feel that we are members of the same family. So when members of the same family, I can relate it to the effect of morale boosting, confidence building measures which seniors and leaders take is equally important as equal to the comfort which is being given to a wounded soldier by his or her parents. It is no less than that. So when somebody walks up, a general or a senior officer, and proudly gives a pat on your back and says, "Well done, my boy, we are proud of you." That one statement itself is good enough to raise the morale of a soldier, because that is how we have learned, that is how the traditions are being carried from one generation to another generation in the armed forces. So if today I feel proud of my achievements, it's not because DP Singh could do something. It's because DP Singh has been trained by the organization who carries such traditions in the blood. And it was my duty rather to keep those traditions high and flying. And that's the reason I could bring some achievements to my pocket. And that is the reason it is important to dedicate it to the organization. That's what I am doing. Yes, sir. How would you remember General Rawat, sir? Because, of course, he has a hand in your training to do that skydiving, which was a dream of yours. What quality did you admire most in him? How are you going to remember him? Trust. Somebody who's a leader,
he should have full faith and trust on his team. Now, I was a veteran, retired soldier he was nowhere duty bound to agree or disagree with my request. Over that, I was 100%, it's a fact, I am 100% disabled. I have injuries all over my body, and amputation is the least bothering injury to me. The injuries, rest of the injuries, the shrapnels, the impact of shrapnels, the cut and the damaged parts of intestine, the hearing loss, the damaged legs and hand. All these injuries are the one which brings more misery to me, the pain to me. Yet, knowing very well that this is the condition of a soldier, if he allowed me to go for the most dangerous act, which is dangerous not just for a disabled soldier but for any normal person also, to do skydiving, it is nonsense if you see logically to go up there and jump out of the aircraft, relying purely on your parachute. Now imagine the quality of a person who has folded your parachute. You are having the full trust on that soldier who has packed your bag, confined that parachute into the bag. So this trust over each other is something which is the most critical part of armed forces and a binding part of the armed forces. And that is what I feel General also exercised when he agreed upon my request. Now I'll quote one more example, the magnanimity of the General, which is yet to see the light of the day. There is one particular area of men, the cadets, which is living a very miserable type of life. The boarded out, injured, disabled cadets. When we met for the first time, the then Raksha Mantri, Mrs. Nirmala Sitharaman, she asked me that what is the most important and critical point out of the whole recommendations of the committee. And personally also I am inclined to that particular point. I requested her that this particular recommendation, which is related to the boarded out disabled cadets, should get implemented ASAP, because there is nothing wrong which these youngsters have done. They were getting trained to become officer and at the most live up to the oath and may sacrifice for the sake of country. Just because during the training they got disabled, how justified it is to not to give them disability or war injury pension. And the reason of not being able to given disability or war injury pension is that they were yet not commissioned as an officer in the armed forces. Vis-a-vis a soldier, if gets disabled during training period, he is taken as enrolled in the armed forces from the day one his training starts. So when General came to know that if this is the lacuna, this is the gap because of which it is not happening, what goes out of our pocket if we give them the commissioning number, IC, Indian commissioning number, from the day one, like we give it to soldiers? Somebody suggested maybe seniority ka panga pad jayega, baad mein panga hoga, later in the life and all that stuff. He said, that's fine. It all will get balanced after a few years. However, look at the irony that because of one IC number is not being given to these gentlemen cadets or the cadets who got boarded out, they are not being supported financially or economically or any other way. That was his opinion. Unfortunately, till today, as of now also, that point has not got implemented. But what I wanted to convey here, that logically, even Chief of Army Staff
the then Chief of Army Staff, General Bipin Rawat, and later during his CDS tenure also, he had understood and he has recommended his frame of mind that let's go ahead and do it. So where did it got stuck? So if journal can have that opinion, that means things can be done. But that also means that somebody, the senior bureaucracy is impacting and stopping him not to do. So the same senior bureaucracy is also must be the reason that at times he has outspoken many things which were not liked by many people, because he again is a soldier only who is supposed to follow the instructions and orders of the government of India. He cannot reject or pick and choose and implement what is good and what is not good. That's what the beauty of the armed forces, especially the Indian armed forces, because we are supposed to follow the orders and we follow come what may. Yes, sir. Yes, sir. I understand, sir. With General Rawat's passing, do you believe there will be another Chief of Defence Staff? There will be another person to fill his boots, although he leaves a major void. Do you believe there can be a push to this matter again? Well, why not? Because I believe heart in heart, every officers of the Indian Armed Forces who has cleared the service selection board and taken commission after training in any of the academies is a thorough gentleman and inclined to keep nation first, team next, and self at last. Maybe over a period of time, it might have got diluted because of various factors. However, heart in heart, everybody is purely agreed and following this Chetwood motto. So anybody who comes on chair, if gets reminded of the basic fact that he has taken the oath and Chetwood motto is what should motivate him and is motivating him to keep the nation first, which he is always doing, and to keep the team next, if he's keeping the team next and himself at the last. So while keeping the team next, whatever is beneficial for the sake of team should get implemented. Ji, sir. So it's a matter of attitude only, just which every armed forces officer carries in his heart. Understood, sir. As a last question to you, sir, we are running a little short on time, but I still want to ask you this because no one knows this better than a person in uniform, that such tragic deaths occur and, you know, it's a personal loss for the families. Tributes will be paid, but that's not enough. How can we ensure that such disasters become the rarest of rare cases? What should be the way forward? Well, I believe that the SOPs in the armed forces are finestly tuned SOPs. And nobody can actually tweak and play around with the policies, the standing operating procedures, which is to be ensured to conduct such flyings, to conduct such operations, to conduct such exercises. Still, there might have gone something wrong, which is under the purview of court of inquiry, which has been ordered, and it is unprecedented court of inquiry because this inquiry holds all the members of tri-services. Yes, sir. Which is very rare to see because the matter is so important and critical. So I'm sure let's keep our fingers crossed and full faith and trust on the officers and gentlemen who are sitting in the inquiry to find out what went wrong, and that will lead to implementation of further improvement if required. Yes, sir. We should have the trust and faith on the organization and the officers who have been tasked to conduct the court of inquiry, because they themselves also understand the fact that it's not a small thing which has happened, and it is very critical and important in the time to come to ensure that if there is something which got lagged should get improved,
And if there is nothing which got lagged, yet we see there is a time, there is a light which is required to be improved upon, we should do that, and it will be done. Let's have full faith and trust and wait for the outcome of the court of inquiry. I'll leave it there, sir. Thank you very much for sparing time for us and sharing your personal memories with General Rawat. And I understand it's also a personal loss for you. So thank you very much for agreeing to do this. Thank you so much. And let's, again, I would request, pray for the early recovery of Group Captain Varun Shaurya Chakra, because it's very critical and important. The only survivor, which is a miracle. Yes, sir. Again, thank you so much, and homage to all the braves whom we lost, and courage to the family who are yet to face and facing day in and out the loss they have suffered. God bless No and doubt, Jai sir. Hind. Thank you, sir. Jai Hind. हैं कुछ यादें जो जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी रही हैं, उन यादों को उन्होंने साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। ये तस्वीरें हम इस वक्त जो दिखा रहे हैं वो बरार स्क्वायर दिल्ली की वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस वक्त श्रद्धांजलि का पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं। वो शख्स जिसने 40 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो भारतीय सेना को भारत की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से दिया है। 1978 से वो सेना से जुड़े रहे और अपने आखिरी वक्त तक जो है वो इस देश की सरहदों की रक्षा के लिए वो सोचते रहे कि किस तरह से हम अपने देश को सरहदों को महफूज रख सकते हैं। पूरा देश इस वक्त जो है गमगीन है, जिस तरह से असमय एक तरह से कहा जाए कि उनका निधन हुआ है। और 16 मार्च 1958 वो जन्मे जनरल बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को हमारे बीच नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश एक जो दुखद हादसा हुआ, उनके साथ 13 अन्य ऑफिसर्स जो थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। इसके अलावा उनकी पत्नी वो इस हादसे का शिकार हो गई। लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को इस वक्त पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। 17 तोपों की अब से कुछ ही देर में उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। बरार स्क्वायर जो क्रेमेटोरियम है वहां पर ये पूरे का पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। अभी श्रद्धांजलि वहां पर जो परिवार के लोग हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो सेना के अन्य लोग हैं वो श्रद्धांजलि वहां पर दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से लोग वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ना सिर्फ भारत से, जितने भी जब ये दुर्घटना घटी है परसों और जब पता लगा कि किस तरह से अब हमारे बीच जनरल रावत नहीं रहे हैं, तो तमाम अलग अलग देशों से भी शोक प्रस्ताव और शोक संदेश आए हैं। और आज खुद भूटान की जो रॉयल आर्मी है उसके चीफ कहे जा रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। नेपाल आर्मी से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य देशों से भी कई लोग यहाँ पर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब बरार स्क्वायर उनका पार्थिव शरीर जो है और उनकी धर्मपत्नी का पार्थिव शरीर पहुंच रहा था। तो 17 तोपों की एक प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इससे पहले ये पद नहीं था, लेकिन जब करगिल युद्ध हुआ था उसी के बाद जरूरत महसूस हो रही थी कि देश में एक ऐसा पद हो, एक ऐसा जगह हो, जो एक ऐसा शख्स हो जो समन्वय बिठा सके तीनों सेनाओं के बीच में। तो उसके बाद से जब चर्चा होती रही तो आखिरकार अब 2020 में हम कहें कि इस पद को सृजित किया गया। उससे पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की कि इस तरह से हम एक पद का सृजन करेंगे और पहली जिम्मेदारी जो है वो जनरल बिपिन रावत को दी गई। उससे पहले आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत रहे और तमाम अलग अलग जगहों पर उन्होंने सेवाएं दी। उनका जो इतना लंबा अनुभव था, उसी अनुभव को देखते हुए पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत को दी गई।
आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए, कहा जा रहा है कि उन्होंने कई प्लान उन्होंने बनाए जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और कुछ आगे चीजों के लिए, फ्यूचर के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन होने हैं, उन प्लान्स को लेकर काम होना था, लेकिन कुछ चीजें वो अधूरी छोड़ गए। लेकिन एक मार्क वो कहा जा सकता है कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी पटरी पर चीजों को लाकर गए हैं कि अब आने वाले दिनों के लिए जो उनकी सोच है, जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं, हालांकि आसानी उनके लिए नहीं होगा, जो भी अगला शख्स सीडीएस बनता है, वो उनके रास्ते को किस तरह से, उनके प्लान को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे आगे चीजों को किया जाता है, ये देखना होगा। तो ये अंतिम विदाई की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कल शाम जब दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका शव लाया गया और तमाम दूसरे 12 अन्य अधिकारियों के शव लाए गए, तो प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज सुबह से भी उनके आवास पर जब हॉस्पिटल से आर्मी बेस हॉस्पिटल से उनके शव को उनके घर पर लाया गया, तो तमाम लोग वहां पर उमड़े हैं, ना केवल दिल्ली और आसपास के लोग, बल्कि जहां से जनरल बिपिन रावत खुद आते हैं, उत्तराखंड से, जहां उनका जन्म हुआ, जहां के वो स्थायी निवासी थे, वहां से भी लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अंतिम श्रद्धांजलि दी। विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, तमाम लोग जो है इस शख्स को अश्रुपूर्ण विदाई जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त 17 तोपों की सलामी जनरल रावत को दी जाएगी, तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे, उनके अंतिम विदाई जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, उस दौरान उससे पहले सैन्य बैंड जो है वो शोक गीत गाएंगे। और 800 जवान वहां पर कहे जा रहे हैं कि मौजूद है। 99 सैन्यकर्मी जो है उनकी अंतिम पूरी यात्रा को एस्कॉर्ट करके बरार स्क्वायर तक लाए हैं। सेना के बैंड के 33 कर्मी जो है वो आखिरी विदाई देंगे। इसके अलावा जो तिरंगे में लिपटा उनका शरीर है वो वहां पर लाया गया है, और 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर भी उनके अंतिम दर्शन स्थल पर वहां पर इस वक्त मौजूद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खुद राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को विदाई दी जा रही है। एक दुखद वक्त है पूरे देश के लिए, और दूसरा ये कि सामरिक तौर पर जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उसे लेकर भी एक झटका है कि उनके जो प्लान्स थे वो एकदम से अब एक तरह से हॉल्ट पर आ गए। लेकिन दुख की बात है, लेकिन कहा जाता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। लेकिन वो जो रास्ता दिखा गया जाहिर तौर पर, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए कैसे अपनी सेनाओं को हम मजबूत करेंगे, ये काम अब आने वाले ऑफिसर्स को, आने वाले सीडीएस को करना होगा और चीजें आगे बढ़ानी होंगी। मेरी सहयोगी दीपावली भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपावली, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज। जी योगेश जी, जैसे आपने कहा कि he leaves behind some unfinished work. He was a leader, he was a decision taker, and he was a catalyst for many changes in the armed forces. And with his sudden demise, he leaves behind a void and a lot of unfinished work. So the question is, who takes that forward? And speaking of him being a decision taker, him being an approachable leader, आपने बात करी कि इतने डिग्निटरीज उनसे उनकी डिमाइस पे they have come to pay their respects, starting from the president to every politician streaming in since the morning. There have been leaders, there have been people from foreign missions also paying their last respects. So Right. while this man could he was there, his stature was large and he met with VIPs, but he was also like a father figure for his boys and his men in uniform. Over the last 2 days after this unfortunate and tragic incident, while we have been in touch with many people in uniform, asking them about their personal experiences and their personal interactions with General Rawat, many of them have told us about this personality of his, which is not very apparent in the media, where he's known to be a very outspoken and forthright and fearless general. However, he is also he's also a soft-spoken man. He's also a man who's very approachable and jovial. That is what I have come to understand speaking to some of these gentlemen over the last few days. We had interviewed, we had on our show with us, Lieutenant Colonel DP Singh, who had very close interactions with General Rawat,
and his family, his wife, Right. Rawat in particular. And he shared with us the fact that despite being of such a great stature, he had the graciousness to listen to a junior. At that time, J.K. Singh was a junior, and he had approached General Rawat with some suggestions, and he was immediately very receptive. This was regarding a suggestion on how military parades should be announced. And to remind our viewers, J.K. Singh is the voice behind our Republic Day parades and many other military events. Right. So that suggestion was immediately lapped up by the general and implemented. आज अभी इस कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा मेजर डीपी सिंह ने अपनी बात रखी, अपने मेमोरीज शेयर किए जनरल जी। रावत के साथ, जहां उन्होंने भी बताया कि जब उन्होंने अप्रोच किया जनरल को कुछ सजेशंस को लेके ऑन हाउ वुंडेड सोल्जर्स should get benefits or how their lives should be improved. The general was very receptive. He was all ears. And उन्होंने orders दिए थे एक event के लिए, उन्होंने last minute पे वो सारे orders change करी after listening to Major DP Singh's suggestions, and he implemented it right then and there, without really Right. without going into too many details. He had trust in his juniors, in the men in uniform, and he was very receptive to what they said. And he was he was very decisive. He was not afraid to change the orders he had given. That is something Major DP Singh also pointed out, that in people who are at such senior levels, usually वो juniors की बात मान के जी, immediately जी। अपनी डिसीजंस बदलते नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो ये बात उनमें एक बहुत ही बिल्कुल। यूनिक चीज थी। बिल्कुल, अब जिस तरह से आपने कहा कि शायद वो तभी यही उनकी क्वालिटीज़ थी, दैट्स व्हाई ही वाज़ सीडीएस, कि उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करना था। तीनों सेनाओं को कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर वो एक साथ एकजुट होकर काम करें, यही शायद उनकी कला थी। वो फौजी थे, लेकिन जिस तरह से फौजी थे उसके साथ उनकी जो डिप्लोमैटिक एबिलिटीज़ थी, और किस तरह से हैंडल पॉलिटिशियंस को करना है, किस तरह से वो अपने ऑफिसर्स को हैंडल करेंगे, आर्मी के ऑफिसर्स को हैंडल करेंगे, नए लड़कों को हैंडल करेंगे। शायद ये वही सारी क्वालिटीज़ थी जिस वजह से वो सीडीएस के लिए पहली पसंद बने थे, और उन्होंने इस पद को संभाला और बखूबी इस काम को आगे अंजाम भी दिया। और जहाँ तक आपने कहा कि जितने भी लोगों से आपकी बात हुई आर्मी के अंदर, हम लोगों की बात हुई, वन इंडिया की बात हुई, तो सभी ने कहा कि किस तरह का उनका अच्छा स्वभाव था। जनरली एक फौजी आदमी को एक कठोर आदमी समझा जाता है, समझा जाता है कि वो जब बात भी करता है तो उसकी बात में भी एक धड़क होगी, एक इस तरह की जब बोलेगा आदमी तो वो कड़क अंदाज में बोलेगा। लेकिन जनरल रावत के बारे में जो कहा जाता है कि वो आर्मी मैन थे, वो फौजी थे, लेकिन उनका दिल जो है आम आदमी के हिसाब से भी उसके साथ कैसे डील करना है, आम आदमी से कैसे बात करनी है, इतने बड़े स्टेचर का आदमी होने के बावजूद कैसे मिलना-जुलना है, वो उनका एक अलग तरह का अंदाज था। मेरे एक मित्र है जो डिफेंस को ही कवर करते हैं, और अपनी पोस्ट में भी उन्होंने लिखा, और कई बार वो उनसे मिले हैं कई कार्यक्रमों में, कि जनरल रावत चाहते थे कि उन्होंने जब अंतिम बार उनकी मुलाकात हुई थी कुछ वक़्त पहले, कि वो उत्तराखंड के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल बनाना चाहते थे जनरल रावत, कि हम उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक बेहतर और अच्छी शिक्षा देने के लिए मैं बोर्डिंग स्कूल यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। वो सपना भी उनका अधूरा रह गया। इसके अलावा उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि जनरल रावत एक्सेसिबल थे, कि ऐसा नहीं था कि अगर उनसे मुलाकात करनी होती थी तो वो मुलाकात करने से मना कर देते थे, लेकिन जब उनके पास वक़्त होता था वो मिलते थे। उत्तराखंड में भी जब दौरे पर जाते थे तो कई इलाकों में वो गए हैं जहाँ पर लोगों से, वो आम लोगों से मिलते-जुलते थे और उनसे बातचीत करते थे। तो इस तरह की शख्सियत जनरल रावत की रही है, लेकिन आज वो हमारे बीच में ज़ाहिर तौर पर नहीं है, तो इसका गम पूरा देश मना रहा है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आस-पास के जो देशों के साथ हमारे संबंध थे, या स्ट्रैटेजिकली हमने क्या चीज़ें रखनी हैं और किस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है मिलिट्री फ्रंट पर, तो उससे लेकर भी आस-पास के जो छोटे देश हैं, भारत के सहयोगी हैं, उनके लिए भी ज़ाहिर तौर पर ये इतना आसान नहीं है। वो
एक सामंजस्य बनाने की कोशिश यहाँ मिलिट्री के साथ, अपने तीनों सेनाओं के साथ थी ही, लेकिन उसका असर जाहिर तौर पर जो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसीज होती हैं दूसरे देशों के साथ, उनके ऊपर भी पड़ता है। तो ये लॉस उनके लिए भी है, इसीलिए यहाँ पर तमाम लोग जो है दूसरे देशों के भी मौजूद है, क्योंकि उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी थे और उनकी जो थिंकिंग थी स्ट्रेटेजी को लेकर, उसका फायदा उन देशों को भी हो रहा था। तो इसीलिए वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अंतिम विदाई जनरल रावत के लिए तमाम दूसरे देशों के लोगों के द्वारा भी दी जा रही है, और अपना देश जाहिर तौर पर आज इस महान सपूत को याद करके गमगीन है। As you mentioned, Yogesh ji, that other countries also feel the void left behind by General Rawat, that he had worked hard to strengthen ties between many allies. So, as we know that due to his exceptional service, unko United States Army Command and General Staff College International Hall of Fame में भी unki exceptional service or contributions के लिए जगह मिले. He was inducted into that Hall of Fame, and he was also an honorary general of the Nepalese army. Unka contribution, of course, baat ki jaye to he has immense contributions over the last over 40 years of service in the Indian army, and then he was the first chief of defense staff because of his deep knowledge and incomparable experience, an extraordinary officer. और इनकी जो achievements है, इनकी पर्सनालिटी, इनकी अचीवमेंट्स, इनकी स्टैचर की वजह से आज जो हमने इनफैक्ट जो तस्वीरें हम इससे पहले चला रहे थे ऑफ द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ जनरल रावत व्हेन हिज mortal remains and that of his wife Madhulika Rawat were being taken to the crematorium, you could see a very spontaneous outpouring on the streets by civilians. Right. The chants of Vande Mataram, there were people bearing the flag and running out to meet that convoy and running alongside it. So this is a very spontaneous picture. It is not staged, and as a nation, understandably, the nation is grieving his loss. And you know what we see on the visuals here, this cannot be stage managed. तो एक जब military leader जब छोड़ के जाते हैं दुनिया, the uniform itself inspires a lot of awe and respect, and the position that General Rawat held, the contributions he made, the achievements that he had over a 40-year-long career, those it shows, it reflects in the reception that the people are giving him. Surely the people on the streets had no personal interaction with the general, but his aura and his service to the nation is what people will remember him by, and that is probably what brought them out to the streets to pay their own last respects to this extraordinary officer. उनके घर के बाहर भी जब civilians public को मौका मिला था उनसे उनको tribute देने का, तब बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे, and understandably most of them could not make it, but they crowded around outside his residence, as you can see in the visuals over here. बिल्कुल, आम लोग तिरंगा लेकर जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल रावत का नाम रहेगा, इस तरह के नारे जो है वो स्लोगन्स सड़कों पर लगाए जा रहे थे जब उनका पार्थिव शरीर विराट स्क्वायर की तरफ लाया जा रहा था। और इस वक्त अब हम बताएं कि कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दी है सीडीएस जनरल रावत को। इसके अलावा जो हम बता ही रहे हैं कि राष्ट्रपति भी कहा जा रहा है कि वो ट्रिब्यूट देने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दिल्ली कैंट के लिए रवाना हुए हैं, और राष्ट्रपति भी वो भी ट्रिब्यूट देंगे। इसके अलावा तमाम लोग जो है अपनी श्रद्धांजलि जनरल रावत को जो है वो दे रहे थे। जनरल रावत के करियर के बारे में दीपावली इस वक्त जो आप बता रही थी कि किस तरह का उनका करियर रहा है, तो जाहिर तौर पर लंबे वक्त उन्होंने दिया है पूरे इस देश के लिए और इस देश की सेना के लिए। 1978 में वो इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे, जो कहा जाता है, और 1978 के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं 2021 42 साल के लगभग 42-43 साल वो अपनी सेवाएं लगातार भारतीय सेना को देते रहे, और आगे भी शायद देते रहते अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता। तो इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया है, और इसमें कई
मोड़ आए जिन्हें उन्होंने संभाला। देश के ऊपर कई अटैक्स हुए इस तरह के, जो बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक हुई और बालाकोट में जो घटना हुई थी, वो सभी चीजें और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत की तरफ से की गई उस वक्त, उनमें प्लानिंग के अंदर और बाकी चीजों के अंदर कहा जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है जनरल बिपिन रावत की रही थी। तो लंबा सफर उन्होंने तय किया है। शिमला से प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाई उन्होंने की है, उसके बाद उन्होंने खड़गवासला जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहां पर वो गए और अपना जो सैन्य प्रशिक्षण है वो वहां पर लिया। उसके बाद देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली। 11वीं गोरखा राइफल्स जो थी उसकी 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट जो है बिपिन रावत को बनाया गया था। गोरखा ब्रिगेड से सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले बिपिन रावत जो है वो चौथे ऑफिसर थे। तो 4 दशकों से ज्यादा का उनका योगदान रहा है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के अलावा कई तरह के सम्मान जो है वो जनरल बिपिन रावत को मिले हैं। एक बड़ा योगदान उनका रहा 4 दशक से लंबा जो सैन्य जीवन है उसके दौरान। जनरल रावत ने बताया अपने दर्शकों को कि ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ दक्षिण कमांड, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड, ये सारे पद जो है वो जनरल रावत ने संभाले। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो इंसर्जेंसी है उसकी कमी के लिए उनका योगदान की सराहना की जाती है। और जो 2015 में म्यांमार में एक्शन लिया गया था, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके दौरान उनकी भूमिका थी। बालाकोट हमले में भी अहम भूमिका जो हम बता रहे हैं कि वो जनरल बिपिन रावत ने संभाली थी। इसके अलावा जो पूर्वी इलाका है भारत का, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC भी कहते हैं, वहां पर जो इन्फेंट्री बटालियन के अलावा कश्मीर घाटी में एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमान भी जनरल रावत ने संभाली है। तो इस तरह के ऑपरेशंस और जो हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है जनरल बिपिन रावत को रही है। और उसी के बाद जाहिर तौर पर जो हम बता रहे हैं कि यही उनकी काबिलियतें थी जिस वजह से देश के पहले CDS के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी। दीपावली जी, अभी बात करें तो सुबह से आई हैव बीन watching the families receive the bodies of the brave hearts yesterday at Palam Airport, and right now I believe very shortly the last rites will also take place. The daughters of General Rawat and Mrs. Madhulika Rawat, they have been resolute, but it is very, I mean, one can imagine how their lives have been shattered with the loss of both their parents in such a tragic and shocking accident on December 8th. The morning, of course, we must remember, and we have not forgotten that 11 other bravehearts also lost their lives in this tragic accident. Right. The brigadier leader and his family. We saw visuals of his wife and his daughter receive his body, and in the morning today, he was also laid to rest. And the unimaginable pain and tragedy that's been caused to their lives as well. General Rawat's daughters are slightly older, but many of these men leave behind young families, little children who have lost their father, and they will have to come to terms with this loss. The feeling probably will sink in with time, but at this moment and for many years going forward, they will feel the irreparable loss of their father and General Rawat and Madhulika Rawat, of course. In the morning, when the wreath laying ceremony was underway at the general's residence in Delhi, his little grandson was also present on being carried by his mother. One of his daughters, they are Kritika and Tarini, and they were there paying their last respects. Those are very moving images, and we see the same, emotional scenes being played out at this point in time at the Brar Square crematorium, where the last rites are very shortly going to begin. So so many lives are shattered by this accident. Of course, the nation has a huge void
and CDS Rawat's boots are hard to fill. However, there will be a decision on who will take on the role, the very important role of the Chief of Defense Staff next. But the lives that have been, tragically ripped apart, the families who will feel this loss forever, my heart goes out to them. डेफिनेटली दीपावली उनके लिए रिपेयरेबल लॉस है ही है, और देश के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। वक्त के साथ कहा जाता है जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे रहते हैं कि जो हमेशा आपको याद दिलाते रहते हैं उस ट्रेजेडी का। तो शायद इस वक्त इस तरह से जनरल बिपिन रावत का जाना अपने आप में वही एक जख्म दे गया है, ना केवल उनकी फैमिलीज के लिए और जो दूसरे लोग इस हादसे का शिकार हुए उन तमाम लोगों के फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ये वॉइड एक तरह से है, एक खालीपन उनके जीवन के अंदर आ गया है। शख्स देश के लिए लड़ते हुए शहीद होता है, वो गर्व की बात होती है। एक आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर जब शख्स अपनी जान गंवाता है, एक गर्व की बात भी होती है। लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह से उनका जाना बेहद दुखद है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इस तरह से उन्हें नहीं जाना था, और वो बहुत बड़ा एक वॉइड जो है वो अधूरापन छोड़ गए हैं उनके जीवन में। इसी के साथ देश के लिए भी जाहिर तौर पर ये एक रिपेयरेबल लॉस है कि जब एक कोशिश हो रही थी, जिस तरह का माहौल हमारे आसपास है चीजों को लेकर सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए किस तरह से जनरल रावत जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, तो वो प्लानिंग एकदम से एक तरह से कहा जाता है कि हॉल्ट हो गई इस तरह का हादसा होने के बाद से। तो ये मुश्किल घड़ी है, ना केवल उनके परिवार के लिए, देश के लिए, तमाम लोगों के लिए। लेकिन उम्मीद है इससे सब उभर कर सामने आएंगे, और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए हैं अपने इस टेन्योर के दौरान, अपनी पूरी लाइफ के दौरान, और जो फ्यूचर प्लान्स जनरल रावत के थे, उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, और बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन भारतीय सेनाओं के अंदर बनेगा। जी बिल्कुल, और सीडीएस का रोल फिल करना ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरतमंद है। इट्स a significant role that is played by the CDS. It was a demand for many, many years, and finally it came to pass in 2020, January 1st, when General Rawat took charge. And his role was to integrate, modernize, and improve the coordination between the three forces at a time that India is facing hostilities, mainly in its northern borders with Pakistan, with China, the aggression from China. To counter that, a coordinated effort is needed from all the three services, and that is what General Rawat had catalyzed. That is what he was trying to improve. And at this juncture, to lose a leader like him is definitely a loss for the nation. But of course, the political establishment will have to take the tough decision, will have to take a decision on plugging that vacuum, even though he leaves a big void. But there will be a decision to appoint the next CDS sooner rather than later. आगे का प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं है एज पर रिपोर्ट्स कि ये कैसे होगा, लेकिन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी विल मेक अ डिसीजन ऑन दैट। फिलहाल ऑफ कोर्स जनरल रावत का कंट्रीब्यूशन हमने आपने बताया योगेश जी, it is incomparable. He also had a good relationship with the current political establishment. Unki banti thi with the Prime Minister, Home Minister, etc. And the Prime Minister's the personality that he projects as a decision taker was very well complemented by General Rawat also, who was also a decision taker. But of course, as we all know, that the ultimate decision lies with the political class, and at the end of the day, a soldier's or the direction a soldier has to follow what the political establishment directs him to do. However, within within that, General Rawat did manage to maneuver and improve the lives of the men in uniform, implement many decisions that were
beneficial to the men in uniform. This is what I've heard many of these veterans say about General Rawat, that his boys were his family, that of course the nation comes first, and then comes your comrades, and then came the individual. So that is General Rawat through and through. That is how he served the nation first, and looked after his boys. And perhaps that is why so many people are expressing their grief at his demise. There are so many posts on social media from people who knew him, as well as from people, uh, from general civilian, from the public, who were in awe and who respected the uniform, the man in the uniform. राइट दीपावली, और जो आपने कहा कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जाहिर तौर पर एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो पद था वो पद ऐसा था कि सेना के तीनों अंग किस तरह से एक साथ काम करे, और जो हमारे पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेना चाहते हैं, तो वो निर्णय कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है सिक्योरिटी फ्रंट पर, और कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, वो उसमें सामंजस्य बिठाना, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना एक बड़ी बात थी। और वो तरीका, वो या वो कला जिसको हम कहते हैं कि वो डिप्लोमेटिक चीजें जनरल रावत को आती थी, इसीलिए वो बेहतर तरीके से इन चीजों को कर रहे थे। और ये जरूरी भी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए कभी भी। अदरवाइज हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में जो पॉलिटिकल एंड आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स से स्थितियां किस तरह की बनी हैं, वो चीज इस देश में कभी आज तक नहीं हुई है। वो भारत का संविधान भी उस चीज को उसने बिल्कुल क्लियर है कि किसकी किस तरह की जिम्मेदारी है और कौन क्या करेगा। लेकिन जब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश होती है, बात होती है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि जो अगर कौन आर्मी को लीड कर रहा है या कौन तीनों फोर्सेस को लीड कर रहा है, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो टॉप पर बैठा आदमी है उसकी क्या सोच है, तो वो किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं चीजों को लेकर, ताकि देश के लिए चीजें बेहतर हो। तो वो सारी तमाम चीजें जाहिर तौर पर वो मैटर करती हैं, और जनरल रावत को वो कला जो है एक तरह से आती थी। इस वक्त हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बरार क्रेमेटोरियम के बाहर की ये तस्वीरें हैं, लेकिन जो खबर आ रही है इस वक्त, जो अंतिम जो राइट्स होते हैं, जिस हिंदू धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं, जो अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, वो क्रियाएं इस वक्त जो है चल रही हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है मधुलिका रावत, दोनों के जो पार्थिव शरीर है वो एक तरह से पायर पर रख दिए गए हैं, और अंतिम जो क्रियाएं जो हम कह रहे हैं कि लास्ट राइट्स जो भी रहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, वो परफॉर्म इस वक्त किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि जो है वो दी जाएगी, और जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, आर्मी के लोग हो, सेनाओं के लोग हो, इसके अलावा आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम में। That's right. About 800 service personnel are present for this funeral as per reports. और जैसे आपने पहले बताया, 17 गन सल्यूट मिला, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लास्ट सल्यूट मिल रहा है इस वक्त। जैसे आपने बताया कि लास्ट राइट्स आर इन प्रोग्रेस. His daughters, with composure but definitely emotional, they are conducting these last rites at the Brar Square crematorium as we speak. The girls, the women, rather Kritika and Tarini Rawat, they are the ones who are leading the last rites. And from the visuals that we can see coming in is that several people have gathered around the pyre, which will shortly be lit, and India will bid adieu to one of its finest sons. बिल्कुल, और अब कुछ ही वक्त में जो है वो मुखाग्नि दे दी जाएगी, और हमेशा जनरल रावत को याद रखा जाएगा, ना केवल पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, बल्कि इस तौर पर भी कि वो कितने
इंसान के तौर पर भी कितने बेहतर और सौम्य इंसान वो थे, जो मैं बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका वही कहना था कि वो जिस तरह के इंसान थे, वो हम दिमाग में, जो हमारे दिमाग में, एक आम आदमी के दिमाग में एक फौजी की छवि होती है, उससे बिल्कुल अलग उनकी छवि थी। बहुत सौम्य और लोगों से मिलने जुलने वाले और इजीली एक्सेसिबल थे जनरल बिपिन रावत। और बाकी कुछ उनका जो टेन्योर रहा है सीडीएस का, उसको लेकर भी कई चीजें होती रही। वो क्योंकि पद जब जनरेट हुआ था तब भी कई सवाल उठे थे। खैर, उसके बाद कुछ बयानों को लेकर भी जनरल बिपिन रावत ने जो कुछ बयान दिए थे, वो एनआरसी के दौरान जब मामला चल रहा था, जो नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था, उससे लेकर काफी विरोध हुआ था। कश्मीर पर एक आधे बयान को लेकर भी बात हुई थी, जिसका उनके खिलाफ बातें भी कई तरह की हुई। लेकिन वो स्पष्ट थे कि उन्हें क्या कहना है। एक विजन था उनके पास कि मैं ये कहना चाहता हूँ और इस तरह से मुझे चीजों को कहना है। तो और जो चाइना के साथ हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पर आए दिन होते रहते हैं, चीजों को लेकर होते रहते हैं, उसे लेकर भी उनकी एक अपनी राय थी। तो अगर उन्होंने कुछ चीजें कही तो वो चीजें उन्होंने स्पष्ट भी कही और बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर एक दूरी जो है वो बनाए रखी, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और एक आर्मी ऑफिशियल के बीच में और सेनाओं के बीच में एक जो दूरी होनी चाहिए, वो दूरी भी उन्होंने मेंटेन करके रखी, जो हमारा संविधान भी कहता है और जिसके लिए ये देश माना भी जाता है कि वो राजनीति जो है, हमारी सेना राजनीति नहीं करती है, राजनीति के लिए हमारी सेना नहीं है। तो वो दूरी भी बनानी बड़ी जरूरी थी और उस दूरी को भी उन्होंने एक तरह से मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। जी, जैसा कि आपने कहा राजनीति नहीं करती सेना, सो इन अ वे many of the statements made by General Rawat were seen as blunt by many sections of the society. He was also criticized by many, but he always stood, he was rooted in his decision that जो भी वो decision लेंगे वो अपने बॉयज के हित में होगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि अगर उनके the men who are under him, they ask him, जैसे अगर पत्थरबाजी की बात करें, so this is a statement that was criticized of by General Rawat, that he said, how can I tell my boys to get hurt and not respond? In fact, one of his most controversial decisions was reportedly to award this Major Lethal Gogoi, if I can remind the viewers, that he Right. was the man who had tied a man to his military jeep as a shield against stone pelters back in 2017 during a by-election in Srinagar. General Rawat had faced criticism for awarding him a commendation card, but he went ahead and did it. In 2019, his comments relating to the Citizenship Amendment Act, the protests against CAA, had once again triggered criticism, but he did not filter all of this, and he said what he meant, and it is understood that he said what he did because he thought that was in favor of his men and Yes, of the country. but he later clarified that statement also, जो मैं कह रहा था कि राजनीति से दूर सेना रहती है, तो उन्होंने वही कहा था कि सेना राजनीति से दूर रहती है और सेना का काम है जो सरकार है उसके आदेश के अनुसार काम करना। लेकिन हाँ दीपावली, ये कभी कभी हो जाता है, हम भावनाओं में भी कभी बह जाते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठे हों, किसी भी तरह की जिम्मेदारी है, कई बार थोड़ा बहुत भावनाएं हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर है, तो उसमें हम कुछ चीजें बोलते भी हैं, बात करते भी हैं। लेकिन उन्हें उन चीजों को क्लैरिफाई भी किया कि मैं क्या चाहता हूं और क्या कहना चाहता हूं, या मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो चीजें भी उन्होंने की थी। लेकिन कुल मिलाकर 40 साल से ऊपर की उनकी सेवाएं और इस तरह से उनका जाना, जाहिर तौर पर वो बहुत बड़ा नुकसान है अपने जीवन के अंदर। हम हैं, आप हैं, चाहे जनरल रावत थे, चाहे देश के उच्च पद पर, अन्य पदों पर बैठे हुए जो बाकी लोग हैं, लाइफ प्रोसेस में जब आगे बढ़ती है तो उस बीच में कुछ डिसीजंस भी ऐसे होते हैं जिनका कभी क्रिटिसिज्म होता है, जिनकी कभी
सराहना भी होती है। इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन लार्जर कैनवास पे अगर हम देखें तो ये जाहिर तौर पर जनरल रावत का लार्जर देन लाइफ स्टेचर रहा, और जिस तरह की सेवाएं उन्होंने देश के लिए दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और लगभग अब मुखाग्नि जो है उनकी बेटी की तरफ से, उन दोनों बेटियों की तरफ से जो है वो जनरल रावत को दी जा रही है। तो अंतिम विदाई पूरा देश जो है अपने सपूत को इस वक्त अब दे रहा है कि दोनों बेटियां मुखाग्नि देंगी जनरल रावत को। तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो हमने कहा कि अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन जो कहते हैं हम सभी, तमाम लोगों को दुख जिस तरह से जनरल रावत का जाना हुआ, और दूसरे जो लोग उनके साथ मौजूद थे, ऑफिसर्स आर्मी के उनके साथ जो मौजूद थे, उनका जाना जिस तरह से हुआ, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय फौज के लिए वो जाहिर तौर पर एकदम से होना वो बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए भी और हमारी फौजों के लिए भी। और इस वक्त अब 17 तोपों की सलामी जो है वो सेना की तरफ से दी जा रही है जनरल बिपिन रावत को, अंतिम सलामी उनकी अंतिम यात्रा के लिए। जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, और क्योंकि पहले सीडीएस वो हैं तो उन्हें उसी सम्मान के साथ विदाई जो है इस वक्त ये देश दे रहा है। Yes, very, very emotional scenes being played out at this point in time. We will play out those visuals also soon. His two daughters lighting the pyre and the 17-gun salute for an officer who leaves behind an extraordinary legacy. So this is the final goodbye. बिल्कुल मुखाग्नि दे दी गई है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों के द्वारा। ये पूरी क्रियाक्रम का जो कार्यक्रम है, जो क्रियाएं की जाती हैं इस दौरान, वो पूरी की गई हैं और अब मुखाग्नि दे दी गई हैं दोनों के शरीरों को। तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जाहिर तौर पर इमोशनल पल है ही है जो वहीं पर हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी, तमाम दूसरे लोगों के लिए भी एक इमोशनल पल है कि इस तरह से एक जनरल का जाना, जो उन्हें नहीं जाना था इस तरह से, जो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। अभी देश के लिए बहुत कुछ उनसे उम्मीदें थी, उन्हें देना था देश के लिए, जो पिछले 40 साल से 42 साल से वो करते रहे थे। आगे भी उनकी सेवाओं की जरूरत जो है वो देश को थी, लेकिन ये जिस तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जाहिर तौर पर सबके लिए मुश्किल भरा वक्त है। It is a very solemn moment at the Brar crematorium as we speak. If we could show you the visuals, which we will shortly, the two daughters have lit the pyre and other protocols are being followed. The 17-gun salute is being given, and if we can give you more details about जो रस्में होंगी, जो funeral जो protocols हैं, the army band is playing the last post and rouse as the funeral pyre is lit by the family. It was also reported that 6 officers from the Army, Navy, and Air Force of the rank of Lieutenant General and equivalent were the pallbearers for General Rawat. And a total of 12 officers from the Army, Navy, and Air Force of the rank of Brigadier and equivalent were on vigil duty at Kamraj Marg, which is the residence of the CDS.
before बिल्कुल this, the wreaths were laid by dignitaries at his home, and before the last rites were done, the wreath laying ceremony was also continued at the Brar Square cremation ground, जहाँ dignitaries और बाकी मिशन के जो हैं diplomats सब आए और अपना respect पे किया. यहाँ एक 132 members of the band, the army band, the services band is going to play, and a total of 800 service personnel are present. 800 personnel मौजूद हैं वहाँ फाइनल सैल्यूट देने को जनरल रावत को. बिल्कुल, तो एक तरह से अंतिम विदाई दे दी गई है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को. उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी है. पूरे सैन्य सम्मान के साथ ब्रार स्क्वायर पर जनरल रावत का अंतिम संस्कार जो है वो हुआ है. तमाम लोग जाहिर तौर पर इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं वो गमगीन हैं. इसके अलावा जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि जनरल रावत को दी है और पूरे देश की तरफ से अपने इस जनरल को भावभीनी श्रद्धांजलि और अश्रुपूर्ण विदाई दी गई है. This is a very poignant moment at the Brar Square crematorium. जो हमें नजर आ रहा है, we can see people are standing just quietly. It's an emotional moment for them. It's a painful memory, and it's a painful moment, though of course the general had an illustrious career. He leaves behind a legacy. He still had many more years ahead of him to serve the nation, and this the way he was tragically taken away from his family, from the country, the years ahead that could have been all of that now simply never again, never to be. All of that really evokes a lot of pain, and the crowds, the people who have gathered to pay their tributes at the Brar Square crematorium are observing silence. Everybody standing quietly, and the funeral pyre we can see is burning. It's burning, and that is the final goodbye to General Rawat and Mrs. Madhulika Rawat. We can see the flames really burning high. We can only wish that the general rests in glory, and this is the final goodbye. It is a very emotional moment for people who are present at the crematorium, and for the nation, of course, for everybody, every citizen of the country. I see his daughters emerge from the place, from near the pyre, and they are being led out by men in the uniform. They have stepped to the side, and they appear to they're being briefed about something, and it appears now that the farewell is over, the last rites are over. तो अंतिम विदाई अपने जनरल को इस देश ने एक तरह से दे दी है और काफी इमोशनल इस वक्त वहां का माहौल है. मुखाग्नि उनकी दोनों बेटियों ने दी है. जनरल रावत की दोनों बेटियों ने, और पंचतत्व में The defense minister is currently speaking to the family from visuals that I'm able to see. Presumably, he's paying his respects to the family, and the crowds have gathered around the family. The cameras that are present at the crematorium are focused
on the two daughters. An extremely painful moment for the two women to have their parents snatched away at whatever age, that too in such a tragic way. Can we can one cannot imagine how painful, how shattering that can be. तो तमाम अपनी सेवाओं को देश याद करता हुआ जनरल बिपिन रावत की तमाम सेवाओं को 40 साल से ज्यादा का उन्होंने जो भारतीय सेना को और भारत को, देश को सेवाएं अपने दी है, उसे याद करता हुआ पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई देता हुआ 1978 से लेकर जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तब से लेकर 2021 8 दिसंबर 2021 तक वो अपनी पूरी सेवाएं जो है वो देश को देते रहे। और उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि जो अगर उनका जो विजन था और देश को कैसे मजबूत करें, सरहदों को कैसे और पुख्ता हम कर सके, मजबूत कर सकें, फुल प्रूफ कर सके चीजों को, देश के अंदर कैसे शांति को हम बरकरार रख सकें, तो उस दिशा में जिस तरह से वो काम कर रहे थे और आर्मी को मॉडर्नाइज, तीनों सेनाओं को मॉडर्नाइजेशन के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे थे और आपस में कैसे उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, उसके लिए वो काम कर रहे थे। उस पर और बेहतर आने वाले दिनों में काम हो, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो है वो हम कहेंगे कि जनरल रावत को होगी। और जाहिर तौर पर उनके जिस तरह के प्लान्स थे उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए आने वाले भविष्य में, वो उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। Very true, Yogesh ji. To carry on the momentum of his work, to carry on the direction, to carry on moving in the direction that he had set for all the three services, that will definitely be the biggest tribute. And to improve the lives of the men in the uniform, to improve the coordination between the three services, that is what CDS Rawat had set out to do, to modernize the army, to modernize all the three forces. That is what he had set out to do. That is the goal he had set. And now the most fitting tribute will be to meet that. पंचतत्व में विलीन होता जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। तमाम लोग वहां पर नम आंखें हैं उन तमाम लोगों की, वो चाहे सेनाओं से जुड़े लोग हैं, आम आदमी हैं, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हैं। इस वक्त सभी लोगों की नम आंखें अपने जनरल को, देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्हें अंतिम विदाई देते हुए 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला CDS उन्हें नियुक्त किया गया था और अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2020 को उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। बतौर CDS जनरल रावत की जिम्मेदारियां थी कि भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण वो कैसे कर सकते हैं, इस पर उन्हें काम करना था और उन्होंने उस पर काम किया भी। और आने वाले दिनों में शायद और बड़ी सोच लेकर, बड़े प्लान्स लेकर वो काम करने वाले थे, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ने उन्हें हमसे छीन लिया। और इससे पहले जनरल रावत भारतीय सेना के प्रमुख रहे। वो 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2017 तक भारत के 26वें थल सेना प्रमुख रहे। फौजी परिवार में ही जन्म हुआ था। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में उनका जन्म हुआ था। पिता भी उनके सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। 1978 में सेना में शामिल हुए जनरल रावत शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद खड़कवासला में के नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण उन्होंने लिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग ली। 11वीं गोरखा राइफल्स से वो जुड़े
5वीं बटालियन जो है 11वीं गोरखा राइफल्स की, उसमें 2nd लेफ्टिनेंट वो बने। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, ये उन्हें सम्मान मिले। इसके अलावा भी कई और सम्मानों से सम्मानित हुए जनरल बिपिन रावत। जिम्मेदारियां बड़ी अपने सैन्य जीवन के दौरान संभाली। ब्रिगेडियर कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, दक्षिण कमांड, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद थे वो उन्होंने संभाले। नॉर्थ ईस्ट में जो चरमपंथ है, इंसर्जेंसी है, उससे निपटने में जो उसमें जो कमी आई, उसमें उनका सराहनीय योगदान रहा। म्यांमार में जो एक्शन भारतीय सेना की तरफ से हुआ था, उसमें उनका योगदान रहा। बालाकोट में जो एक्शन किया था, एयर स्ट्राइक जो की गई थी, उस दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रही। इसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है चीन के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, उस पर इन्फेंट्री बटालियन और इसके अलावा कश्मीर घाटी में एक राष्ट्र राइफल सेक्टर की कमान भी जनरल बिपिन रावत ने संभाली थी। had predicted that there can be a more aggressive China and that India needs to prepare themselves for it. He has been talking in many events, in many lectures about technological warfare and biological warfare, which is all too real according to him, and that India should also start preparing for such eventualities. So he definitely had big plans for the forces and for the country. He was possibly implementing them as well, and he was taken away at such an important juncture. He had at least 1 more year, 1.5 years more of service as Chief of Defense Staff left, and within that time frame, I'm sure he had his plan cut out, he had his work cut out on what he wants to get done. The men in the military, the men and women in the military are decision takers, they're decision makers, and uh, they carry out what they have set out to do. So definitely we could have seen, had he been with us today, over the next 1.5 years, uh, some of his goals being reached. And now this the reins have to be handed over to someone else, someone surely as capable, someone to fill the boots of General Rawat. But that search will surely be a tough one. General Rawat ticked many boxes of the kind of leader who could be the Chief of Defense Staff. So many people that have been speaking about General Rawat over the last few days have agreed that he had it in him to not only rub shoulders with VIPs, but to also come to the level of an ordinary soldier and understand his life, his motivations, his pain. And he had the heart in him and the steely will in him to improve conditions for the men in uniform as well as for the functioning of the three forces to be able to serve the nation better. बिल्कुल दीपावली, और अब तक वो बखूबी अपनी इस जिम्मेदारी को संभाल भी रहे थे, इस दिशा में काम कर भी रहे थे, और आने वाले दिनों में हम शायद देखते कि कुछ बड़े अहम बदलाव होते चीजों को लेकर। लेकिन उससे पहले ही जो है इस समय इंसिडेंट, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, असमय हमारे बीच से जनरल बिपिन रावत चले गए। तो पंचतत्व में विलीन हो चुका है शरीर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। ये समय उनके परिवार के लिए भारी, पूरे देश के लिए भारी। इसके अलावा जो अन्य 12 लोग जनरल बिपिन रावत के साथ
मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में, वो जो हमारे बीच नहीं रहे, वो भी तमाम लोग, उनके परिवार के लिए भी ये बेहद मुश्किल वक्त जिस तरह से उन्हें खोना पड़ा है, और देश के लिए भी ज़ाहिर तौर पर मुश्किल वक्त, जब एक साथ इस तरह की दुर्घटना में देश ने अपने सपूतों को और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे जो लोग और ज़रूरी लोग जो सामरिक दृष्टि से इस देश को एक नई दिशा देने वाले लोग, वो खो दिए देश ने। ये ज़ाहिर तौर पर बड़ा नुकसान देश के लिए। तो तमाम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है जनरल बिपिन रावत को और तमाम दूसरे ऑफिशियल्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्रैश क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कई चीजें जो है वो इस वक्त चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर एयरफोर्स ने भी कहा है कि वो पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि वो हेलीकॉप्टर जो बेहद सुरक्षित माना जाता है, वो कैसे इस दुर्घटना का शिकार हो गया। डबल इंजन हेलीकॉप्टर, और जब खुद सीडीएस उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अलग तरह के कई प्रोटोकॉल, कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, और वो सब जो है वो प्रोटोकॉल पूरे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर क्यों ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, क्या वजह रही, तो जाहिर तौर पर इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और किस नतीजे पर पहुंचा जाता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और जाहिर तौर पर इस वक्त ये होना भी चाहिए कि क्या इस तरह की, ताकि आने वाले दिनों में हम कोई इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार ना हो, उनसे बचा जा सके। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आखिरकार हुआ था उन अंतिम क्षणों में, अंतिम वक्त में, जो इस तरह से ये दुर्घटना घटी है। जी, and of course the probe will reveal that. We hope that such incidents become, if not they end, they become rarest of rare. And now the nation's prayers are of course with Group Captain Varun Singh, who is being treated, and the nation hopes that he will recover and he will be with us soon. He is the sole survivor of the tragic helicopter crash on December 8th, and he is under treatment now, although he's critical. But of course, prayers and hopes are that he will recover. Group Captain Singh, among the only survivor, he was also conferred with the Shaurya Chakra for saving his LCA Tejas aircraft, although it was the protocol said that he could have abandoned the aircraft and saved himself, but he took very calculated risks. He made complex maneuvers, and he managed to land the aircraft safely. So these were the kind of people who were aboard that aircraft that day, that chopper that day with General Rawat. They were men, extraordinary men, all of them. And to lose so many in such a tragic accident is definitely a huge loss to the nation. And prayers are there, of course, that Group Captain Singh can recover and be there with us. This letter that he wrote to his alma mater has gone viral. It's being widely shared, and I don't know if you've come across it, but where he's told the students who are at his school after receiving his Shaurya Chakra, that to be mediocre is not the end of the road. To be mediocre in school does not mean that in life you cannot succeed. And that letter, it's so poignant. It is doing the rounds now, and it shows the kind of person he is, that after so many successes जी, that I'm talking about, of course, ये आपको रोकूंगा यहाँ पर दीपावली, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं। ये वो अंतिम वक्त की तस्वीरें हैं जब 17 तोपों की सलामी जो है जनरल रावत को दी गई, और उनकी बेटियों को आप देख पा रहे हैं कि वो मुखाग्नि जनरल रावत और अपने पिता और अपनी
माता मधुलिका रावत को दे रही हैं। ये वो अंतिम क्षण की तस्वीरें हैं। जिस वक्त उन्हें अंतिम विदाई दी गई, पंचतत्व में विलीन अब शरीर हो चुका है जनरल सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। 17 तोपों की सलामियों के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस देश ने विदाई दी है अपने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को। दुख इस बात का ही है कि उन्हें ऐसे नहीं जाना था, इस तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं होना था। अभी उन्हें बहुत कुछ करना था, लेकिन जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या वजह रही, ये जानना भी जरूरी है। और जो मैं पहले भी कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि सच्ची वही होगी कि उनके जो प्लान्स थे इंडियन फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के और किस तरह से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने पर काम हो, बेहतर तरीके से आगे चीजें हों। हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। These moments will of course be etched in the memories of everybody, and one cannot imagine what is going through the hearts and minds of Tarini and Kritika, the daughters of General Rawat. But being from a defense family, being from a military background, the families are no less. बिल्कुल। तो विदाई अपने जनरल को इस देश ने दे दी है और उम्मीद करते हैं कि उनके सपने पूरे होंगे, उनके प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे। इस उम्मीद के साथ एक श्रद्धांजलि बेहतर तरीके से ये देश अपने जनरल को दे पाएगा, और यही हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से भारतीय सेनाएं जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से योगदान जो है वो और बेहतर तरीके से देंगी। इस वक्त सीना ताने जवान खड़े हैं हमारे सरहदों पर, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है आगे, और क्या बेहतर किया जा सकता है फोर्सेस के लिए, उसी पर जनरल रावत काम कर रहे थे और आगे भी उनकी सोच को जारी रखते हुए चीजें हों। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे कि 40 साल से ज्यादा का जो सेवाएं उन्होंने इस देश के लिए दी है उसे किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है, और जो जगह छूट गई, खाली हो गई जनरल रावत के जाने से, उसे भी भरा नहीं जा सकता है। बस उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनको सपनों को पूरा करने के लिए काम हो, बेहतरी देश के सेनाओं के लिए हो, उसी को हम उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपावली, योर लास्ट वर्ड्स। Yes, we carry this moment in our hearts, and we carry the memories of General Rawat in our hearts as a nation. And the best tribute, the most fitting tribute, is to, of course, walk on the path that he has shown us and carry out the goals, meet the goals that he has set for the nation and the armed forces.